Hello everyone, welcome back to another one of our weekly career classes. My name is Aditi and I'll be the host for today's live session. Thank you all for joining in, and I'm so sorry for the technical glitch earlier. We are thrilled to have you here. And most of you might already know what the topic of discussion for today is. But for those who might not have any clue, for today's career class, we will be talking about myths in the design domain and career avenues. And for that, we have joining us today as our expert speaker, Ms. Shipra Anand, ma'am. I'll just give her a little introduction before we start. So Ms. Shipra Anand, the founder of Academy for Fashion Careers, a NIFT Delhi alumna, and is a design educator, consultant, counselor, and an entrepreneur with 27 plus years of experience, who has been playing the pivotal role in the space of human resource creation in design and design education in Lucknow. Welcome and thank you, ma'am, for joining us today. Thank you so much, Aditi. And it's a pleasure and an honor both to be here on this platform of iDreamCareer, which is live. Thank you and good afternoon, everyone. Looking forward to a wonderful session together. Yes, thank you, ma'am. So before we start, I just want to mention that if you have any questions regarding a career in the design field, please don't hesitate to use the live chat to ask your questions or share your thoughts. We will be taking up the questions by the end of the live. So just stay tuned because we'll be answering it towards the end. Let's dive right into our topic for today. Ma'am, you can take over. Thank you, Aditi. Thank you, ma'am. Good afternoon and welcome to the session one more time. Let us start by just outlining the topics that we're going to take up for the session right now. It is going to be a four-pronged approach, beginning with debunking of common myths around design. Because in my journey of design academics and career guidance of last more than 27 years, one thing that I found has changed little is the myths and the preconceived notions that we all carry to the table, especially as parents more, because today I feel the students still have the access to information thanks to internet, and still the buying of those options, and that is something which still needs a little bit of discussion and looking at all sides of the coin. So, which is why we thought this is the best start to our discussion and journey of discovering design domain. So we'll be doing debunking of common myths around design. Then, of course, as we move forward, it is very important to explore what design can offer to us as an avenue. So that takes us to the next pole. And then once we know what all is the possibility in the design domain, of course, we all get very curious, and we must also know where can we gather those skills from, where can we learn all those things. So we go ahead and we'll discuss top Indian design colleges. And of course, if at all your queries have not been answered along the way, which I hope we would be able to, then of course we do have our live Q&A session, which I'll be requesting Aditi to be monitoring that also, and we will be taking it forward from there. So let's move forward, having outlined our session agenda. So let's start with this quote, which yours humbly has it, which is, art may be a choice, design is default. Why do I say this? It's because many a times this is one of the most common myths that we will be taking up as we progress. People consider design as art. So people think that if you're thinking design, you're thinking art. But art and design are actually very, very different in their domains, in their approach, in their purposes. Though, of course, they do intersect at certain times, but they are separate identities. And because of this common preconceived notion, people always often
use one for the other. So here I would like to emphasize upon that design is something which exists. Okay, anything that comes into existence will have design. There is no debating the existence of design. So art, of course, can be a choice. We may choose to indulge in art at a time, but design will always be around us. Design will exist. What remains a matter of debate or discussion could be whether you like the design or not, whether it is conventional, unconventional, whether it is futuristic, whether it is primitive, whether it is repetitive, whether it is boring, exciting, whether it is innovative. Those are the aspects of discussion. Design itself or the existence of design itself is beyond discussion. So it is something which is default. And when something is as default as life around us, then of course it ought to have a 360 presence in our life, which is why design is everywhere. It is ubiquitous and it offers immense opportunities to the possibility of design. When everything has design, it will definitely be designed and it will definitely offer scope for design. So which is what we are here to discover through this session that we have. Let's move forward to the first leg of our discussion, which is about the myth busting. So I'm sure there will be a lot of thoughts in your mind about design careers when we say you must bring something to the table which you must be thinking. So here we have come up with broad 10 most popular myths. So we'll do that. And if there is any further, any 11th or 12th that is popping up in your mind, please definitely reserve them for your questions. That will be a great time to ask this. So let's start with one of the most popular myths. So of course, these myths number 1 to 10 are not in any priority order, randomly titled. But this is one of the most popular, that designers need to be great artists. I have a lot of children, students coming to me, aspirants rather, design aspirants coming to us and voicing this, that I would love to design. I aspire to be a designer, but I am not great at art. I cannot paint, or I have not indulged much in art. So here, I would like to address this the very first. See, design, many a times, design is an original idea. We as designers are supposed to be coming up with original ideas. So, and many a times these ideas are visual in nature. There are text-based representations also, graph-based representations also, diagrammatic representations also, chart representations also. But however, in design, whenever we look at the physical aspect of design, the product aspect of design, then a lot of the ideas are visual. Now, how would you communicate a visual idea? You need to draw it into a visual format on paper. So a drawing skill good enough whereby you are able to replicate or translate your visual idea into on the paper as you had visualized. Here, I would like to emphasize upon this particular line, that as you have visualized, as much competency and skill where what you have visualized, there is no gap in the realization of that visualization on paper. So as long as you have this particular skill set in place, you are sorted and fit to be into the world of design, whether it is learning design or practicing design. So please do not feel yourself falling short on this account because you may not be able to paint like great artists. It's not actually very, very needed. Knowing it is always an asset. So having a skill set is always an asset, but not being one is neither a limitation. So my message here is, even if you are not a great artist, welcome to the world of design. As long as you're willing to learn as much competency
as needed, as I had just outlined. So yes, only enough drawing skills to communicate your idea. And there are certain domains that may not even need this kind of illustration skills, because then I did talk about things like systems design or solution design for in terms of say social design or human computer interaction design. Then lot of times we may not even need to use illustration as a medium of expression. So again, there we might have a leverage of not being a great artist. We might not have any limitation there. Let's come to the myth number 2. Again, when we talk about this, that okay, it's only enough drawing, that then I'm countered in immediately, but I just can't draw. I've never drawn before. So how can I design? So then this brings me to this another popular myth that only talented people born with the gift of art, being of an artistic hand, only they can draw. Well, of course they can draw because they have been gifted, and it's a gift. One should always value their gift. But drawing per se is an acquired skill. Drawing is a skill. Visualization may be a talent, though even that has a process of learning in the domain of design learning space. However, drawing to me is a skill, and to all of us, it is a skill, and any skill can easily be acquired. People having the knack for it or the flair for it, they may take lesser time acquiring it, and they may master that craft quicker. They may be exemplary in their output, fair enough, they deserve to be there, but that does not limit anyone else from learning how to draw. Somebody may need maybe 5 practices, somebody may need 50, so be it. What is important is we are able to face the mirror and know our possibility and limitation. Like if we need 50 drawings to build up the skill level, we should be committed to doing that. That is important. So it's an acquired skill needing a certain amount of commitment. I always maintain drawing and math, both are almost similar in nature in terms of their skill acquisition. Both need practice, dedicated, relentless practice. And both can be mastered because there are only in as many concepts to learn, whether it is math or whether it is drawing, there are as many concepts to learn, and then it is all about their application. So the more you practice, the better you apply. So that myth gets busted here. Let's come to the third one, another popular one. And interestingly enough, sometimes I have found educators themselves, the teachers and all in schools also carry this particular sentiment that children who have art in school as an elective, only they are eligible to look at design as a career because people think that it is a prerequisite to enter design. Well, let me specify this, that even a graduation in art, which is a fine art graduation, that also does not limit people from applying to its domain. So of course, design, why should design? Design is all inclusive. Okay, you could have studied any stream in school. You could have studied PCM, PCB, PCMB as well, or humanities or commerce. Even your electives could have been any varied elective, right from computer science to say geography or music. You are equally eligible. Okay, you do not need any prerequisites to come to design. The requisite is in terms of skill set. Having studied any stream, any subject, as long as your drawing skills are in place to the level where you, whatever you are visualizing, you are successfully able to translate it on paper. Now, this skill set could be acquired through formal learning or informal learning. That's another matter. Also, there is an interesting point to know. People, when we say art as a subject in school, that primarily
has a lot of focus on wet medium handling. Of course, we start with pencil sketching and nature study and a little bit of still life. And then we move on to the same thing, but in wet medium. We are doing a lot of painting. But design, especially at the entry level, when we are talking about design entrance, getting into design colleges, the entire entrance process requires our test or assesses our skills more in dry medium. So yes, even there, people with art skills will still need to bridge certain gaps at the time of entering to design domain. So in a way, yes, they do carry a little bit of edge, but really not, they're not having a great head start either. So I hope that settles a lot of minds out there, and you can safely focus on your subject in school where you can score well for your board examination and still choose design and move forward, which again brings me to another popular myth. Okay, it is for non-science students, commerce, humanities, they can look at design. PCM, PCB are very, very academically inclined sciences and vying for some and serious careers. But yes, I would like to submit here that there are certain domains in design and certain colleges and examinations, like the tech institutions like IIT, ETU, or VIT, and some others, who are offering design domain as a part of their courses. They have PCM as an eligibility filter. So one has to have PCM to be able to appear even for those design courses and choices. So some examinations may be open to all, but some colleges will have this filter. So qualifying a certain examination and getting a seat at that a particular college which is considering those scores is a different story. It's very conditional. So PCM students have good chance of having an edge where PCM eligibility is used as a filter for eligibility. Then, of course, there is one course in our sector which is almost an, I'll say, a parallel to a BTech program, which is termed as Bachelor's in Fashion Technology in TNA sector, which is Textile and Apparel sector, which again is only tailor-made for PCM students. So a lot of children who are looking at BTech as a career option also take it up as a parallel opportunity, because it is not open to any other students besides PCM. So I hope that myth gets busted here. Then, of course, ma'am, sorry to interrupt. There's this comment which wants you to, if we could use Hindi as well as English, because I think there are few people who cannot understand English they want. So I think use mix English as well as Hindi so that, yeah. बिल्कुल बिल्कुल और इसके लिए मेरी तरफ से क्षमा याचना, मैंने इस बात का ध्यान मुझे शुरू में रखना चाहिए था. तो यदि पिछले की 4 स्लाइड्स में अगर कुछ भी ऐसा है जो लगता है कि मुझे दोबारा लेना चाहिए, प्लीज आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं वापस चली जाऊंगी इस स्लाइड पे, कोई प्रॉब्लम नहीं. और फिर मिथ की अगर हम बात करें तो एक है कि लोग ये समझते हैं कि आई हैव लॉट ऑफ टाइम, स्पेशली पेरेंट्स. कुछ पेरेंट्स हैं जो आते हैं जिनके बच्चे एकेडमिकली बहुत ब्राइट है, एंड वो बहुत ही एग्जैस्परेशन के साथ ये एक्सप्रेस करते हैं कि इतना एकेडमिक बच्चा है मैम, 95% आया, बट अब डिजाइन करना चाहते हैं. So this is something which feels that okay, people think design is an easy and easy escape from academics, कि जिसको पढ़ाई नहीं करनी है आगे वो डिजाइन सोचता है. तो ये with all due respect to every other profession, लेकिन मैं चूंकि इस डोमेन पे हूँ, मुझे पता है कि ये कितना demanding learning भी है और प्रोफेशन भी है. Design is a serious business and it is a very rigorous curriculum, because ये
काफी हद तक लर्निंग बाय डूइंग करिकुलम, इसमें 70% तो लर्निंग आपकी प्रैक्टिकल होती है और थ्योरी उसमें हार्डली 30% होगा। तो आप कुछ भी सीखते हैं तो उसमें आपको लाइव प्रोजेक्ट करना पड़ता है और उसमें आपको बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत सारा काम लेता है। तो ऐसा नहीं है कि डिजाइन जो है कुछ हल्का फुल्का सा कोर्स है या आपको सिर्फ जाना है ड्रॉ पेंट करके चले आना है, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत हम ये इमेज शायद हम फाइन आर्ट या पेंटिंग की इमेज से इसको कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग डिजाइन के लिए भी वही है जो फाइन आर्ट के लिए है। तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे लोगों से गुजारिश करूंगी कि इसको थोड़ा सा तवज्जो दी जाए कि हाँ ये है उतना ही सीरियस, डिमांडिंग एंड रिगरस प्रोफेशन। और इसके साथ ही फिर एक उसका फॉलो अप मिथ है कि डिजाइन मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट। तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगी कि नहीं, ऐसा नहीं है। डिजाइन इज अ सीरियस बिजनेस, ओके, बिकॉज डिजाइन इज डन फॉर कमर्शियल प्रोडक्ट ऑल्सो। और किसी भी प्रोडक्ट का सेल वैल्यू कई बार डिजाइन एलिमेंट ही उसका जो है यूएसपी हो जाता है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन हो जाता है, कि जिसकी वजह से लोग उसको खरीद रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनमें, और डिजाइन में सिर्फ वो नहीं है कि जो वो दिख रहा है। डिजाइन बहुत ही खूबसूरत कोट है एप्पल फाउंडर स्टीव जॉब्स का, डिजाइन इज नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक, फॉर हिम इट वाज लाइक डिजाइन इज व्हाट इट फील्स लाइक एंड हाउ इट वर्क्स। तो यस, कई बार फंक्शन पे भी डिजाइन फंक्शन पे ही पूरा फोकस होता है। तो वो एक बहुत ही टेक्निकल एस्पेक्ट हो गया कि कोई चीज कैसे फंक्शन कर रही है, उसमें आप कैसे वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। तो वो एक बहुत सीरियस बिजनेस है, क्योंकि अगर वहां गलत हो गया तो वो पूरी एक इंडस्ट्री, पूरी कंपनी, उसकी आउटपुट, उसकी कमर्शियल वायबिलिटी, उस कंपनी की इकोनॉमिक रिजल्ट, आउटपुट, इन सब पे इफेक्ट डालता है। तो डिजाइन बहुत ही सीरियस बिजनेस है। आर्ट एंड क्राफ्ट एक बहुत ही इंडिविजुअल इफेक्ट है, लेकिन डिजाइन पूरी इंडस्ट्री को केटर करता है। तो जब आप किसी इंडस्ट्री को केटर कर रहे हैं तो उसमें तो बहुत स्टेक्स बहुत हाई है और बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों की लाइवलीहुड उससे जुड़ी हुई है। तो डिजाइन के एंड पे अगर कुछ भी कमी बेशी होती है तो वो आगे पूरा एक डोमिनो इफेक्ट होता है पूरे उस पर्टिकुलर कंपनी पे, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी पे। एंड डिजाइन का एक बहुत अहम हिस्सा होता है डिजाइन थिंकिंग। वी लर्न अबाउट डिजाइन थिंकिंग, इट्स अ प्रोसेस through which we learn how to find solutions, identify problems, and how to ideate upon solutions, and how to create solutions, and how to test a solution for its for its performance and any kind of flaw if it has, and then we come back and it's a complete process which takes time. And उसमें last process का जो last part होता है वो तो एक continuous loop होता है। कोई भी कंपनी जो वायबल कंपनी होती है वो कभी भी अपने किसी भी प्रोडक्ट के लिए डिजाइन प्रोसेस क्लोज नहीं करती है। उसके लास्ट स्टेज को, उसकी टेस्टिंग स्टेज को, उसकी रीआइटरेशन स्टेज को वो हमेशा ही ओपन रखते हैं। इसीलिए अगर आप देखते हैं कि अगर आपके सपोज आपके मोबाइल पे कोई ऐप है तो आपके पास उसके अपडेट्स आते रहते हैं। इट इज ओनली बिकॉज दे वांट टू बेटर देयर सर्विस एंड योर एक्सपीरियंस विद दैट पर्टिकुलर ऐप। तो एंड इसके तहत, डिजाइन थिंकिंग के तहत जो स्किल सेट हमको मिलता है, इट इज सो वायबल कि वो सिर्फ डिजाइन में ही काम नहीं आता है, वो लाइफ की किसी भी सिचुएशन में जब भी हमको कोई डिसीजन मेकिंग कगार पे अगर हम अपने आप को पाते हैं कि यहाँ हमें कुछ डिसीजन लेने होंगे, कुछ फैसले लेने होंगे, तो किन बिना पे हम ले सकते हैं जो कि एक काफी हद तक एक आइडियल फैसला माना जा सके, वो इस प्रोसेस को अप्लाई करके काफी हद तक हम कवर ले सकते हैं। इसी के साथ सिंस हम आर्ट और डिजाइन का जिक्र कर रहे हैं, so let's talk about the difference between art and design. So because it's a common, again as I say, it's very common for any of us to use one for the other. हम अक्सर आर्ट बोलते हैं तो डिजाइन का मायने रखते हैं और डिजाइन बोलते हैं तो आर्ट को रेफर कर रहे होते हैं। तो यहाँ से अब जितने हम लोग यहाँ पे हैं सेशन में, तो शायद आज
यहाँ से हम थोड़े से और अवेयर निकलेंगे और हम जहाँ आर्ट यूज करना चाहिए वहाँ आर्ट यूज करेंगे, जहाँ डिजाइन यूज करना चाहिए वहाँ हम डिजाइन यूज करेंगे. So art basically is a free self-expression of by an artist, an individual's expression. Mode of expression could be anything. You could draw, you could paint, you could sculpt, you could write, you could perform, you could make music. So medium of expression आप कुछ भी चूज कर ले, जब तक आपका एम सिर्फ अपनी बात कहना है तो वो आर्ट है. डिजाइन ऑन द अदर हैंड is always indulged in with a particular purpose. आप जो भी मीडियम पिक करेंगे या जो भी प्रोडक्ट पिक करेंगे, आप उसको किस किस लिए बना रहे हैं. बहुत बड़ी चीज होती है वाई, हम क्यों बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं. और डिजाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो यूजर सेंटर्ड होता है, उसका एक पर्पस होता है, उसको यूज किया जाता है. एक अगर बहुत ही खूबसूरत चीज है लेकिन अगर वो सपोज चेयर ही बना रहे हैं, बहुत सुंदर चेयर दिख रही है, but if it's not balanced and you cannot sit on it, it's a bad design because it's not performing its job well. So design में function बहुत important है and it is always user centered. It is targeted to be used by somebody. Art, sometimes art is supposed to be disruptive. वो social norms पे question करते हैं. आर्ट के जरिए लोग थोड़ा जो है चिंतन मनन करना चाहते हैं, सवाल उठाना चाहते हैं. So art may be a little questioning in its nature, disruptive in its nature. Design on the other hand is very solution oriented. Design का काम है आपके लिए solution ढूंढना, आपकी quality of life को improve करना, आपके लिए convenience निकालना लाइफ में. तो पूरा डिजाइन का पूरा पर्पस solution oriented होता है. Then design art, एस्थेटिक और स्किल का कॉम्बिनेशन होता है. पूरा फोकस उन्हीं दोनों की कॉम्बिनेशन पे आउटपुट पे रहता है. डिजाइन में इन दोनों चीजों को इस्तेमाल करके उसका बिगर पर्पस होता है कि हम कोई सोल्यूशन निकाले, बेटर फंक्शनैलिटी दे, डाइवर्सिटी दे, वर्सेटैलिटी दे, वैल्यू एडिशन दे, इनोवेशन दे. और इसमें स्किल, क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड market analysis, psychological behavioral psychology of the user, and of course management. Because art बहुत इंडिविजुअलिस्टिक चीज है. अगर कोई आर्टिस्ट कोई चीज बना रहा है तो वो खुद बनाने में यकीन रखेगा, वो खुद उस चीज को क्रिएट करेगा. बट डिजाइनर्स, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल होता है, कि इंडस्ट्री को केटर करता है, तो डिजाइनर्स क्रिएट करते हैं. प्रोटोटाइप तक फिर भी हो सकता है वो डिजाइनर उस अपनी टीम के साथ रहेगा. बट इवन प्रोटोटाइपिंग भी डिजाइनर अकेला नहीं करते, उनके पास पूरी टीम होती है जो सैंपल डेवलप कर रही होती है. तो वहां पे मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ये सारे एस्पेक्ट भी डिजाइन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. मार्केट की स्टडी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कंज्यूमर स्टडी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ट्रेंड एंड फोकस एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो जाता है, टेक्निकल अपग्रेडेशन और नो हाउ इंपॉर्टेंट होती है. क्या क्या नया मार्केट में आ रहा है जिसको हम लेवरेज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के टर्म्स में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के टर्म्स में. इसलिए डिजाइन एक बहुत ही होलिस्टिक और बहुत बड़ा डोमेन है एज कंपेयर टू आर्ट. तो एज आई सेड, आर्ट इज नॉन कमर्शियल और नॉन स्केलेबल. डिजाइन की हमेशा पर्पस होता है कि उसकी स्केलेबिलिटी एंड इम्पैक्ट उसका पर्पस भी होता है. अगर कोई एक अच्छी चीज बनी है जिससे एक सर्टेन सेगमेंट को फायदा पहुंच सकता है, तो वो फिर ज्यादा से ज्यादा उस पर्टिकुलर सेगमेंट में वो इम्प्रेगनेट करे, वो चीज आए. ओके, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिजाइन के लिए. तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है मेरा पिछले 27 सालों में, कि जहाँ डिजाइन हम बोलते हैं लोग उसके साथ ऑटोमेटिकली फैशन वर्ड लगा देते हैं. अच्छा, फैशन डिजाइन. उसके बाद इमिडिएटली आधी जनता स्विच ऑफ कर जाती है, ओहो ये तो फिर गर्ल्स की बात हो रही है. So design means fashion design. Fashion design means girls are interested in fashion. So it is for girls and it is girls domain. Ironically, अगर मैं बोलती हूँ कि अच्छा चलो let's name some great fashion designers, तो लोग जो है सब्यसाची मुखर्जी का नाम सबसे पहले लेंगे, तरुण टहलियानी का नाम लेंगे, रोहित बाल का नाम लेंगे और अलेक्जेंडर मक्वीन का नाम लेंगे, तो राज फॉरेन का नाम लेंगे. इंसिडेंटली
प्रोवाइडरों का नाम लेंगे, ये सारे मेल डिजाइनर्स हैं who may be designing for female clients because yes, female are more interested in fashion, but females are more fashion centered in terms of being a clientship, in terms of being a client, not only because it is for the female, so by the female. ये एक assumptive inference है कि हाँ, तो जहां तक मैंने सिंस हमने पहले बात की थी कि डिजाइन इज यूबिक्विटस, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है जॉन बेरी का कि a design gets noticed only when it fails. A successful design is invisible. और इसी वजह से शायद हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे आसपास हम जितनी चीजें यूज करते हैं सब में डिजाइन है, शायद हम कम अप्रिशिएट इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे जीवन को इतना आसान बना देता है कि उसके होने का एहसास खत्म हो जाता है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो उस दिन हर जगह डिजाइन है, तो हर चीज डिजाइन हो रही है, लेकिन हर चीज हर तरह एक ही तरह से बन नहीं रही है। Everything has a different methodology and approach and material and technique and technology to come into existence. The processes are different. तो इस वजह से डिजाइन के डोमेन को डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें ऑफ कोर्स जो ब्रॉड 3 स्पेशलाइजेशन अगर हम कहें तो 4 रादर, वो एक है इंडस्ट्रियल डिजाइन डोमेन, कम्युनिकेशन डिजाइन डोमेन एंड टेक्सटाइल एंड अपैरल, जिसको हम फैशन की तरफ भी ले जा सकते हैं, और आर्किटेक्चर। ये 4 ब्रॉड डोमेन है। इसके अंदर बहुत सारे आपको चॉइसेस मिलते हैं जिसमें आप मेजर कर सकते हैं या आप स्पेशलाइज कर सकते हैं। ऐसा अगर हम इंडस्ट्रियल की बात करें तो प्रोडक्ट डिजाइन जो है वो अपने आप में एक बहुत ही लार्ज डोमेन है, बिकॉज प्रोडक्ट में भी अगर हम कहें तो या तो हम इंडस्ट्री सेंटर्ड प्रोडक्ट्स की तरफ जा सकते हैं स्पेशलाइजेशन में, जैसे होम अप्लायंसेज हो गए, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हो गए, या ऑटोमोबाइल एंड ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो ये हमारे सेक्टर वाइज प्रोडक्ट डिजाइन का एक दायरा हो गया। और हम मटेरियल एंड टेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रोडक्ट डिजाइन में हम डिफरेंट स्पेशलाइजेशन देख सकते हैं, जैसे कि हार्ड मटेरियल स्टडी, जिसमें कि हम सारे हार्ड मटेरियल जैसे वुड, मेटल, फाइबर, ये सब प्लास्टिक, ये सब हमारे हार्ड मटेरियल, स्टोन, तो ये सारा हार्ड मटेरियल में चला जाता है। तो एनीथिंग विच इज क्रिएटेड यूजिंग दीज मटेरियल और इनके जरिए जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो हमारा हार्ड मटेरियल कैटेगरी। देन वी कम टू सॉफ्ट मटेरियल कैटेगरी। उसमें पेपर बेस्ड प्रोडक्ट, लेदर बेस्ड प्रोडक्ट, टेक्सटाइल बेस्ड प्रोडक्ट, एज द नेम सजेस्ट सॉफ्ट मटेरियल, तो ये सारा कुछ ये कैटेगरी है। देन वी हैव फायर्ड मटेरियल कैटेगरी, जिसमें कि हमारा सारा क्ले, सेरामिक, ग्लास, टेराकोटा, ये सारा कुछ हम ले सकते हैं। देन ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन सेक्टर में बहुत ह्यूज है आज की डेट में। कम्युनिकेशन इज द की। हर कोई जो है छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, रिगार्डलेस ऑफ द सेक्टर एंड द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ जो है अपना हर तरह के सोशल मीडिया पे भी प्रेजेंस बना के रखते हैं, और उसके लिए उनको कंटेंट भी जनरेट करना होता है। तो हर चीज में कम्युनिकेशन डिजाइनर्स आज की डेट में रिक्वायर्ड है। सो मच सो कि इवन बैंक लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा हैव नाउ एडवर्टाइज फॉर एक्सक्लूसिव कम्युनिकेशन डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर पोजीशन। तो कहाँ डिजाइनिंग और कहाँ बैंकिंग सिस्टम, बट आप देखिए तो वहाँ पे कॉन्फ्लुएंस आ रहा है, क्योंकि आज की डेट में सबको अपने अपने सर्विस को प्रेजेंट करना है, कम्युनिकेट करना है। यहाँ पे हमको ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन डिजाइनिंग, फिल्म वीडियो कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन डिजाइन, इंटरैक्शन डिजाइन, यूआई यूएक्स डिजाइन, डिजिटल डिजाइन, डिजिटल में आपका न्यू मीडिया आ गया, आपका इवन गेम डिजाइन सेक्टर आ गया, पोर्टल, वेबसाइट डिजाइन, तो बहुत सारे आपको जो है डिफरेंट स्पेशलाइजेशन मिलेंगे। Then we have textile and apparel sector, huge. In fact, शायद इसलिए हम लोग फैशन से कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अपैरल या फैशन, बिकॉज वी आर द फर्स्ट कंज्यूमर्स ऑफ इट। और कंज्यूमर्स तो हम सब चीज के लिए, लेकिन इसको हम थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमारी पहचान भी बनती है। अगेन they say, again, there's a very good quote by Coco Chanel that you dress shabbily
they remember the dress. You dress impeccably, they remember the lady. So yes, आपके कपड़े आपकी पहचान कुछ हद तक तो होते ही। तो अब इस सेक्टर में भी बहुत सारे चॉइसेस मिलेंगे हमको। टेक्सटाइल डिजाइन विच इज बेसिकली द स्पाइन ऑफ टीएनए सेक्टर, बिकॉज ये पूरा मटेरियल लेवल पे, और यहाँ पे सिर्फ हम we're not only talking about wearable textiles, we are talking about home furnishing, we're talking about meditech, agrotech, geotech, tech textiles, smart textiles. So there's a huge sector of textile, and it is at one point, at some point, it is very technical also. Like we have courses in BTech in textile technology also. So if people with technical bent of mind can look at textile as their choice also, but it would need a good friendship with chemistry, because it deals with a lot of chemical process in terms of dyeing, printing, finishing of the fabric. So all of that will be needed. Architecture is one domain. As you can see, there's an image here, which is so very sustainable design, because it is designed in a manner to leverage maximum natural lighting in the space. So not only it looks very futuristic, very spaceship kind of a feel in its design structure, the main aim is to facilitate natural lighting. So we can see this here. Then of course, today, whenever we say that we are looking at any product or anything that we are interacting with, there is a physical aspect of it, and then there is an experiential aspect of it. So today, this has become a very, very important domain, the user experience behind anything. So experience design is a very important domain. So as you can see how technical it is, and how market oriented it is, how process oriented it is. It is far, far removed from just art, craft, painting domain. Then we have interaction design, we have social design. So there is a lot that you can look at in terms of specialization. Okay, then let's go to the next myth. Sorry to interrupt, ma'am. I just wanted to say something. Since like you were talking about so many options and so many categories, I just wanted to mention that there are so many options available, and there are so many, like we have just talked about so many things, but still so little, right? And you have still so much information to give out, and there's so much information that students don't even know about. Like this is just a small part of all that is out there, and it is so confusing. So I just wanted to mention that we have launched a design guidance program where students can get end-to-end guidance from design experts. And those students who are like interested into the design field and they want to learn more about it and get in-depth knowledge. So I'll just mention the link in the chat box, and if anybody is interested and want to learn more, you guys can check it out. I'll just mention the link in the chat box. Thank you, ma'am. You can continue. So sorry for interrupting. Thank you, Aditi, and thank you for sharing this information, and that too at a very, very right time, because yes, I was also feeling that it is such a vast domain, and it is just the tip of the iceberg that we are really mentioning here. So I too felt a little limited and rushed also. So I'm glad that there is an opportunity for all of us to maybe go beyond this 1 hour session and then explore it at leisure, at length. So it will be a great platform to explore, I'm sure. So let's move forward to the other myth, which is people think, okay, fine, design कर तो लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, design में है क्या? So as I said, since हम नोटिस ही नहीं करते ना, हम अपने आसपास हम कितना डिजाइन कंज्यूम कर रहे हैं, तो शायद हम उस स्कोप को भी नोटिस नहीं करते हैं. Otherwise, there is that everything has design. How can design not have a scope? Okay. हाँ, ये जरूर है कि हमारे पास चॉइस इतना है कि हम डिजाइन पे तवज्जो देना चाहते हैं, बस चॉइस सिर्फ उतनी ही है. अब thanks to the changing scenario and perception and even consumer demand and consumer needs, everybody, especially in our countries,
और यहाँ मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा बात करूंगी, बिकॉज अब्रॉड डिजाइन का रोल, डिजाइन की वैल्यू को थोड़ा पहले से तवज्जो मिल रही है। हम लोग अपनी कॉन्टेक्स्ट में थोड़े से नेसेंट है, तो उस केस में अब we have woken up to the relevance and importance and necessity of design and focus on design. So in that context, it is an industry which is growing by a good 23 to 25% growth rate in India itself. Globally, you can see the figure, it is $162 billion industry and growing by leaps and bounds. And interestingly enough, look at the gap between the demand and supply data of qualified, competent designers. 62,000 versus 7,000. So you can see the scope of opportunity here. Okay, it is not a domain which is limited scope, because as everything has design, and design is about finding a solution. So wherever there is a problem, there is a need for solution, and there is a need for design. Okay, it's a very beautiful blend of art, tech, and management. You take away the aesthetic, you're left with just engineering part of it. You take away the function, you're left with art part of it. So you need designers who create this fine, impeccable, aesthetic and performing balance for anything. So designers are hired across sectors. It is interdisciplinary and it is also one domain. Like जैसे मेडिसिन में होता है या फूड इंडस्ट्री में होता है, उसी तरह से डिजाइन इंडस्ट्री में भी एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज बहुत है। आपको जितना स्कोप जॉब का है, हाँ मोस्टली ये प्राइवेट सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर में क्योंकि डिजाइन क्रिएशन से कनेक्टेड है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन काफी हद तक प्राइवेट सेक्टर डोमेन है, तो इस वजह से इसमें इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी प्राइवेट में ज्यादा है। गवर्नमेंट में बहुत सारे इंटरवेंशंस होते हैं जिसमें डिजाइनर्स को हायर करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज डिजाइनर्स को हायर करते हैं, और स्पेशली कैंपेन इलेक्शन के टाइम पे या गवर्नमेंट खुद डिजाइनर्स को हायर करती है। इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन डिजाइनर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। आप देखते हैं कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम होती है उसको किस तरीके से प्रमोट करते हैं, शॉर्ट मूवीज एंड पोस्टर्स एंड तो ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन डिजाइनर्स हर जगह रिक्वायर्ड है। देन इसके अलावा एकेडमिया में गवर्नमेंट में स्कोप है, बिकॉज ऑफ कोर्स लेक्चररशिप, प्रोफेसरशिप, तो वो थोड़ा सा गवर्नमेंट में स्कोप है। Otherwise, private sector it's a huge sea of opportunities there, and it is a very good vehicle for entrepreneurship and start. So you have a lot of designers who are into startups. In fact, a lot of designers who join hands with techies, a lot of techies who have gone on to also upgrade themselves as designers. Maybe उन्होंने graduation भी tech का किया, फिर masters in design किया, और now they are a great combination of tech and design, and they come up with some entrepreneurial startup. तो इस तरीके के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे। एज अ डिजाइन, हायरिंग ऑफ डिजाइनर्स कट्स अक्रॉस सेक्टर्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो, कम्युनिकेशन सेक्टर हो, वेबसाइट हो, टेक्सटाइल एंड अपैरल हो, ऐप मेकिंग हो, होटल डिजाइनिंग हो, इवन सिस्टम डिजाइन, इवेंट डिजाइन, हर जगह आपको डिजाइनर्स रिक्वायर्ड है। लेट्स कम टू द नाइन्थ मिथ that people think कि अच्छा ठीक है, मैं then people say बहुत क्रिएटिव नहीं हूँ और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है ड्राइंग सीखने में, लेकिन मुझे इस इंडस्ट्री में वो देख के अच्छा लगता है, मुझे इस इंडस्ट्री का पार्ट होना। ये एक बहुत ही कॉमन एस्पिरेशन होती है। Okay, fine, I understand that I am one person who will need probably 50 practices of drawing, and I'm not willing or committed enough to do that kind of practice, but still I want to join the big sector of design. So yes, since हम बात करें डिजाइन की स्केलेबिलिटी की, डिजाइन के इम्पैक्ट की, तो कुछ भी क्रिएट होता है, डिजाइन क्रिएट होता है, प्रोटोटाइपिंग होती है, उसके बाद वो फिर प्रोडक्शन में भी जाता है। तो ऐसे रोल्स भी हैं, नॉन डिजाइन रोल्स एग्जिस्ट करते हैं, जो प्रोडक्शन है, मैनेजमेंट है, प्रमोशन है, तो पूरा बिजनेस चेन को कनेक्ट करते हैं, पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट को कनेक्ट करती है। तो किसी भी डिजाइन डोमेन में किसी भी उसमें ये सारे एस्पेक्ट, ये रोल्स भी एग्जिस्ट करते हैं।
So there is a possibility of joining the sector in a non-design, non-creative capacity as well. We can look at that also. And then, of course, we come to another popular myth, which says that, okay, if you can only go for a master's in design or a PGD in design if you have done your UG in design. Well, that's not really required for every course. Of course, you cannot go for a master's in architecture without having done bachelor's in architecture. So the point is, the more technical a course would be, the more required you will be to have a prior learning experience at UG level. तो थोड़ा सा जितना ज्यादा टेक्निकल होगा उतना थोड़ा सा रिक्वायरमेंट बढ़ेगी. आर्किटेक्चर बहुत ही टेक्निकल डोमेन, बट बियॉन्ड दैट it is not required. Okay, I myself am an example of that. I have done my UG in physics, math and geology, and then I topped it with a PG in knitwear design from NIFT. So it is possible very much, and it can be easily done. So you can come from any learning sector and you can join the field of design at any level, UG or PG. Okay. In fact, आज की डेट में जितने स्किल बिल्डिंग शॉर्ट कोर्सेज हैं, अपग्रेडेशन, स्किल अपग्रेडेशन कोर्सेज, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं कम्युनिकेशन सेक्टर के स्पेशली, जो कि लोगों को एज अ सर्टिफिकेशन कोर्स भी अवेलेबल हो रहा है डिफरेंट प्लेटफॉर्म जैसे कोर्सेरा या गूगल फ्री लर्निंग स्पेस, सिंपली लर्न, यूडेमी, इन सब पे भी आपको इस तरीके के कोर्सेज मिलेंगे, तो आप उसको भी कर सकते हैं. डेफिनेटली जितना वक्त आपने लगाया होगा एक पर्टिकुलर डोमेन में, उतनी आपकी वैल्यू में तो डेफिनेटली इजाफा होता ही होता है, तो वो एक फैक्टर तो है. So this is all about myth busting about design. I hope I was able to touch upon all the commonly held myths, and if you carried any of them, I hope we were able to dispel the class. Now let's come to the second part of our discussion, which is avenues in design, which kind of we have touched upon in one of our myths also, but let us take it a little more forward. So various specializations. So I'm going to give you an umbrella thing that, okay, yes, you can do a bachelor's in design, or you could do a master's in design, or you could do a bachelor's in architecture. So there are 4 verticals in which all the design learning ecosystem is slotted. So there is a vertical of industrial design, जिसमें जितना भी प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, जितना भी प्रोडक्शन ओरिएंटेड है, प्रोसेस ओरिएंटेड है, फिजिकल प्रोडक्ट रियलाइजेशन से जो भी कनेक्टेड है, वो सारा कुछ इंडस्ट्रियल डिजाइन सेक्टर में आता है. तो जो भी प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट है, वो हम इनको यहाँ पे प्लॉट करेंगे. इसमें हमारे पास प्रोडक्ट डिजाइन का भी ऑप्शन है. Then we have interior design, furniture design, then we have glass and ceramic design, we have exhibition space design, we have landscaping, then we have transportation and automobile design. Then so it's a huge sector. We have accessory design, like textile and apparel sector. The same thing, the product design is more focused towards accessories and all. So there is a huge base out there. So any child who is very interested in seeing things work, so अगर आपको engineering level तक का जुनून नहीं है, लेकिन आपको फिर भी चीजों को, फंक्शनल चीजों को इंटरेक्ट करने में, उनको क्रिएट करने में थोड़ा बहुत मजा आता है, मॉडल मेकिंग जैसी चीजों में, तो आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ से. बिकॉज एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि हाउ डू आई नो वेयर आई बिलोंग. तो उसके लिए एक थोड़ा सा हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं कि अच्छा, क्या मुझे इन चीज़ों में मजा आता है, क्या मुझे 3D में विजुअलाइजेशन में कंफर्ट है, या मैं उसको सीखना चाहूँ. तो ये आंसर हमारे वहाँ पे होंगे. कम्युनिकेशन सेक्टर जो है वो अपने आप में अगेन बहुत वास्ट है, और आज की डेट में ये सेक्टर लार्जली ये मीडियम, डिजिटल मीडियम में सिमटता जा रहा है. एक वक्त था जब ये बहुत मैनुअल प्रोसेस भी हुआ करता, बट अब ये लार्जली डिजिटल मीडियम है. इसमें हम ग्राफिक डिजाइन इज द स्पाइन एंड द बेस ऑफ इट. इसके अलावा इसे हम और डाइवर्सिफाई करें या अपग्रेड करें,
तो एनिमेशन है, फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन है, देन UI UX डिजाइन, इंटरैक्शन डिजाइन, इंफॉर्मेशन डिजाइन, सिस्टम्स डिजाइन, फैशन कम्युनिकेशन एक जोन है, एक डोमेन है जिसमें अगेन बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज हैं अबाउट फैशन जर्नलिज्म, फैशन इवेंट मैनेजमेंट, fashion media management, and image consultancy and celebrity management. Then it is about visual merchandising, which is again a zone in its own right, styling, creative photography, advertising, then AR, VR, XR. So it's a huge domain. Okay, of course, कुछ terms आपको jargon लग रहे होंगे, but I'm sure when you go to our this platform of career guidance, you will find more details out there, and you can get these details from that space which Aditi was kind enough to share with us. So then, of course, textile and apparel sector, we all appreciate it a lot because we are direct consumers and appreciators of it. हमको सबसे पहले देखना होता है कि किसने कब क्या पहना हुआ था. तो अब इससे भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर डिजाइन में आने के लिए हमारी एस्पिरेशन का कारण फेम है कि हम डिजाइन में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि हम फेमस होना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे हमें थोड़ा सा चॉइसेस थोड़ी देख के लेनी पड़ेंगी, बिकॉज फैशन और अपैरल एक ऐसा डोमेन है जिसमें कि इसकी पॉसिबिलिटी हाई है, बिकॉज अगेन पीपल नो कि किसने ये गारमेंट क्रिएट किया है. टेक्सटाइल में एज अ टेक्सटाइल डिजाइनर नोबडी वुड गेट टू नो कि ये फैब्रिक का किसने बनाया है, क्योंकि जितना टेक्निकल अगेन प्रोडक्ट होगा उतना ही वो डिजाइनर उस प्रोडक्ट के बैक एंड पे चलता चला जाएगा. तो अगर उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक आने में 10 चैनल्स लगने हैं तो डिजाइनर तो पहले पायदान पे है. तो जो 11वें पायदान पे कंज्यूमर है उसको नहीं पता चलेगा कि अच्छा आप जो फोन यूज कर रहे हो आपको कभी पता है कि आप इस कंपनी का फोन यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कितनी बड़ी टीम है डिजाइनर्स की जो उससे लगातार काम कर रहे हैं आपको नहीं पता. आप लोग अपने डेफिनेटली कुछ फेवरेट गेम्स होंगे जिनकी वजह से आप शायद अपने पेरेंट्स से थोड़ी बहुत डांट भी खाते होंगे कि आप सुबह शाम वही कर रहे हो, बट आप उस गेम को एंजॉय करते हो, बट आप उसको एक अलग नजरिए से अगर अप्रिशिएट करें तो इसलिए there's a battery of designers out there. कोई है जो कैरेक्टर बना रहा है, कोई है जो उस कैरेक्टर का लुक डिजाइन कर रहा है, अगर वो कैरेक्टर बेस्ड गेम्स है, अगर वो एक्शन बेस्ड गेम है तो कोई है जो ग्राफिक्स क्रिएट कर रहा है, कोई है जिसने पूरा इंटीरियर एक्सटीरियर सेटअप क्रिएट किया है, साउंड सेटअप किया है, कोई है जो व्हीकल्स डिजाइन कर रहा है जिसमें फैंसी व्हीकल्स होते हैं, देन कोई है जो वेपनरी डिजाइन कर रहा है क्योंकि अगर एक्शन गेम है तो उसमें वेपनरी भी होती है. तो अब फिर कोई एक है जिसने पूरे गेम का ही एक कॉन्सेप्ट सोचा हुआ है. ऑलराइट, so this is about textile and apparel, and architecture is self-explanatory. Urban planning, we know it is explanatory. This brings us to the next step, which is design colleges in India. Just like in any sector, we can study design across 4 verticals, like the government colleges, the top-notch private colleges, then universities who have Department of Design and School of Design, and then there are independent institutes who are offering design learning ecosystem under various diploma programs or certificate programs. Here we'll be discussing the top government colleges, and for the rest of the information, definitely I'm sure the design career guidance page will have enough information to supplement it. In terms of now, this is again a very interesting revelation. बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं मालूम होता है कि आप IIT से भी डिजाइन पढ़ सकते हैं. तो ये एक बहुत ही अच्छा जरिया है IIT में जाने का, बिना JEE से गुजरे हुए, लेकिन हाँ एक दूसरे एग्जाम से गुजरना होता है जो कि जिसको हम UCET बोलते हैं. अंडर ग्रेजुएट लेवल पे इसको हम UCET बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे इसको CET बोलते हैं. तो UG लेवल पे IIT बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, IIT DMG, DPU, VIT, इसमें बॉम्बे के अलावा बाकी सब जगह थोड़ा सा फिल्टर है बीच का.
यूसीड खुद भी कोई फिल्टर नहीं, आप किसी भी डोमेन से, एंड यूसीड के बहुत सारे रिजल्ट शेयरिंग कॉलेजेस में. देन वी टॉक अबाउट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, जो कि हमारे देश का सबसे पहला डिजाइन इंस्टीट्यूशन था, came about in 1952. And there are, for undergraduate studies, there are 5 campuses across Ahmedabad, Bhopal, Vijayawada, Kurukshetra, and Jorhat. PG campuses in Gandhinagar and Bengaluru as well. Then there are 18 NIFT. They are all central government IMI colleges. There is Footwear Design Development Institute. And then, of course, we have CEPT. We have SPA, School of Planning and Architecture. Then we have Sir J.J. College of Architecture. We have School of Art also. Then we have Film and Television Institute of India, which is about the design domain, learning domain in film and video communication sector. There are a lot of courses out there. And the entrances, how you go about them, there is a brief mentioned in the entry. We can definitely look at a detailed discussion, maybe at our platform or at any other session that we may find scheduled separately for that, because it needs a very, very proper, a lengthy chat, a chat in its own right. So there is, the entrance is usually a 3-stage, 2-stage process within studio, situation, GDPI. So these are the colleges, and this brings us to the commencement of the 4th segment, which is the Q&A round. So yes. Thank you so much, ma'am. Over to you. Yeah, thank you so much, ma'am. I think we have a few questions, and I think there are a few questions which we have already answered throughout the your presentation. I'll just look for questions which we haven't. There's one question by Priyanka. She asks, are designers limited to working in creative industries, or can they find opportunities in various sectors like healthcare, finance, or any other? Very good question, Priyanka, and thank you for asking this. Yes, there are a lot of opportunities. I mentioned one in finance sector where I did talk about the banks seeking designers, but in the creative domain itself. However, if you talk about non-creative, we can look, design can be looked at into context, the creative exploration context and solution finding context. So in health sector, there are a lot of social designers at work who are working in health sector as well, working with organizations like WHO as well, and they're finding solutions. There are examples for that, like there are these public health centers. There's this new concept that is being developed of kangaroo mother care centers. So for this, there were a designer, in fact, one of my own strategists, she has designed a harness for the skin-to-skin contact between mother and the newborn infant while the mother's hands are free and she's at work. So such kind of design interventions for social design purposes, where even customs and cultures are leveraged to find solutions. So it is very much possible, and there are a host of opportunities out there, Priyanka. Thank you so much, ma'am. The next question is by Bhavna. She asks, design colleges and courses are generally very costly. What is the way out for students from economically challenged backgrounds? All right. So yes, to a certain extent, we can talk about that. There are two ways to look at it. One, if we are looking at not all colleges are as expensive, first thing first. Second, government colleges, one should target government colleges. There are certain economically viable government colleges like FTDI or NIIT Mohali. They have very reasonable fee. Among private sector, WUD has a reasonable fee. Beyond that, there is also possibility to take up 1-year or 2-year diploma program from institutes, standalone institutes, private institutes, which will give you that skill set, and you will get an opportunity to join the industry. But yes,
you should do that with realistic expectation setting that you will be joining the industry probably with a little lower launch and a little lower starting salary, and you will have to work your way up where growth opportunities are equal for all. Okay. We have another question by Vridhi. She asks, do designers have to be natural born artists, or can I develop design skills through practice and learning? You definitely can develop design skills through practice and learning. I maintain drawing is an acquired skill and design is a process. Basically, exploration, harnessing your creative ideas or your imagination into a tangible outcome is what design learning is all about, which is why you are going to a design learning ecosystem at a college to be able to adapt to this process, learn the process, and give the desired output. You can definitely go ahead. Okay. The next question is from Mohit. He asks, ma'am, design के courses ऐसे भी होते हैं क्या जो sustainable and environment friendly designs पे focused होते हैं? बिल्कुल मोहित, इनफैक्ट आज की डेट में आप किसी भी डिजाइन डोमेन को लेंगे वहाँ सस्टेनेबिलिटी का बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, और आज तो हर कंपनी अपने एमिशंस को जो है वो लिस्ट आउट करती है, रिवील करती है, डिस्क्लोज करती है कि उनका कार्बन फुटप्रिंट कितना है। तो वो चाहे टेक्सटाइल एंड अपैरल, अनफॉर्चुनेट बात ये भी है कि टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर को वन ऑफ द बिगेस्ट पोल्यूटर्स माना जाता है, और जिसके लिए बहुत काम हो रहा है। तो आज की डेट में सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डिजाइन वो एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट भी है, और हर कोर्स, हर कॉलेज अपने कोर्स में इसको लेवरेज कर रहा है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का भी दायरा है, आप सोच सकते हैं, मतलब ये है और इससे बहुत काम भी हो रहा है। Okay. We have another question. It says, ma'am, does this mean design is solely about being aesthetic, or does it involve a deep understanding of user experience and functionality? Design definitely involves a deep understanding of user experience and functionality. However, we, being designers, we are prone to leverage aesthetics in our outcomes as well. Otherwise, we can well be engineers. So yes, user experience and aesthetics and function, they go all hand in hand as far as design is concerned. We have another question. It's a little confusing, but I think it means, I think the person wants to know which specialization in design is in demand. It's a interesting question. Basically, as I said, हर चीज में डिजाइन है, हम हर चीज इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आसपास, तो हर चीज में स्कोप और डिमांड भी है। बट अगर आप मुझे कहें कि एक चीज पॉइंट आउट करिए, तो हाँ, इस समय कम्युनिकेशन सेक्टर बहुत डिमांड में है, जिसमें ग्राफिक और यूआई यूएक्स ये दो पे बहुत ज्यादा फोकस है, क्योंकि ये अक्रॉस सेक्टर्स हर कोई हायर कर रहा है। यूआई यूएक्स डिजाइनर्स को भी हायर कर रहे हैं, क्योंकि छोटे से छोटा बिजनेस भी अपने आप अपना ऐप जनरेट कर रहे हैं, अपना वेबसाइट मेंटेन करते हैं, अपना सोशल मीडिया के सारे हैंडल्स मेंटेन करते हैं, डिजिटल प्रमोशन करते हैं। तो इसलिए ग्राफिक डिजाइनर्स और यूआई यूएक्स डिजाइनर्स की आज की डेट में सबको जरूरत है। बट having said this, my message still remains, every domain of design is equally viable. कुछ दिखता है, कुछ कम दिखता है, काम सब कर। Yes, and I think, ma'am, it's also very important to understand not just what's in demand, but what you are interested in doing. And yeah, very well. Yeah. So okay. So there's, I think this is one of the last questions. Ma'am, can I become a UX designer without a background in psychology or user research?
Is it all right for me to assume that you want to become UX designer after going through a design learning process? So once you are open to going through a training course, any course to study UX design, please do not worry. You will be taught all this. It is UX psychology, UX research, tech methodology, and how to collect data, how to draw inferences, and all of user testing. All of this is part of the UX experience and UX design course. So I am sure that when you say कि आप ये करना चाहते हैं तो आप पहले इसको लर्निंग सिस्टम से गुजरोगे, जब आप गुजरेंगे तो आप ये सब कुछ ऑटोमेटिकली सीखेंगे भी, तो सेट भी डेवलप होगा, and you'll be good to be, you'll be fit for the industry. Yes. Well said, ma'am. I think that's all for the questions. Apart from that, we have, I think, answered like in between the live while it was going on. So I think we can wrap up our today's session. So I would just like to thank you, ma'am, for sharing your experience and taking out the time to like join us today for this live. Pleasure is equally mine, and it's an honor to be here. And thank Thank you you so everyone. Yeah, I hope that everybody got the answers to the questions. If you have any more questions, or like I said before, if you want to learn more about the career in design or want to get in-depth knowledge or learning, you can simply scan the QR code on your screen and it will take you to a career guidance in design program page where you can get guidance directly from a design experts counselors. Apart from that, I would also like to say, like, don't forget to subscribe to our channel to stay updated and never miss any of our weekly career class and other insightful content. Thank you all for joining us today. We hope that you found this topic as well as the session very helpful and valuable. And have a fantastic day. And we look forward to seeing you next Saturday, same time, 4 p.m., same place, YouTube. Thank you so much. Thank you, ma'am. I would like to thank iDreamCareer for this opportunity and invite, and thank you to Team IDC, and thank you. Thank you.